Hi guys, and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I will be trying out Huda Beauty's 4 filter skin finish stick foundation. So this is the outer cardboard packaging. It looks like this, and the product comes in this really nice sleek packaging. Love it. Love the look of it, the feel of it. It looks really nice and luxe, and it's perfect for travel. This foundation is priced at 3,250 rupees, and you get 12.5 grams of product, and it comes in 39 different shades. So ये जो इनका एक्चुअल फाउंडेशन है, जो 4 फिल्टर लिक्विड फाउंडेशन है, इसमें मेरा शेड है बकलावा 340G, एंड ये स्टिक फाउंडेशन में मेरा शेड है tres leches. ओके 320G tres leches. तो हुडा ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने वेबसाइट पे शी इज मेड दिस रियली नाइस हेल्पफुल शेड चार्ट वेयर इफ़ यू आर कंफ्यूज कि आपका कौन सा शेड है तो आप उनके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. तो उन्होंने अपने शेड चार्ट में ऑलरेडी मेंशन किया था इफ़ यू आर 340G बकलावा इन देयर OG फाउंडेशन, इससे जो मैच करता हुआ मेरा शेड रहेगा वो होगा tres leches इन दिस फाउंडेशन. ओके, एंड दिस मैचेस परफेक्टली. ओके, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मैच होता है, ब्लेंड्स ब्यूटिफुली इनटू माय स्किन. सो आई पिक्ड अप दिस फाउंडेशन फ्रॉम सेफोरा स्टोर. इंडिया का जो सेफोरा स्टोर है वहाँ से मैंने ये बाय किया है इन द मंथ ऑफ फेब. उसी दिन आई थिंक जस्ट लॉन्च हुआ था एंड आई हैपन टू विजिट सेफोरा, और ये मैंने डिस्प्ले पर देख लिया. सो आई इमीडिएटली परचेस्ड इट बिकॉज बिलीव मी गाइज, जितने भी लोगों ने फाउंडेशन ट्राई किया है दे रेव अबाउट दिस वन. सो ऑब्वियसली आई हैड टू ट्राई इट आउट. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑन हुडा ब्यूटीज वेबसाइट. मुझे पता नहीं अगर मैंने मेंशन किया कि नहीं. यू गेट लाइक 39 शेड्स टू चूज फ्रॉम, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. सो द फॉर्मूला ऑफ दिस फाउंडेशन इज बेसिकली क्रीम. ओके, तो जो उनका OG फाउंडेशन है लिक्विड है और ये क्रीम फॉर्मूला है. एंड कवरेज आप इससे कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रॉम लाइट टू बिल्डेबल. एंड इसका जो फिनिश है वो नेचुरल फिनिश है, एंड इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, वीगन, नॉन comedogenic, waterproof, and it will last up to 10 hours. So it gives you 10 hours of wear time. That I'll have to see because आज मैं बहुत late shoot कर रही हूँ. तो let's see, I'll try to at least keep this foundation on my face for at least 8 hours if not 10 hours. लेकिन आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट देखना because I will be letting you guys know how this foundation wore on me. So I'm just going to quickly read product info. So it says, a flawless filtered finish. The luxuriously creamy stick formula melts into the skin for a natural filtered finish that lasts up to 10 hours. Whether you prefer full coverage or barely any at all, this versatile formula will let you be the master of your complexion. Swipe it on and build it up. The stick formula is ideal if you are on the go or in a hurry. And thanks to its long wearing, waterproof, humidity and sweat resistant formula, you can set it and forget it for the rest of the day. And it is fragrance free, non comedogenic and vegan. So they have categorized the shades into fair, light, light medium, medium, medium tan, tan, deep tan and rich, and they have divided the undertones into beige, neutral, golden and red. So I'm really excited to try this foundation today. I have such high hopes from this one and I'm just absolutely loving this packaging. It is so perfect. In fact मुझे इनका liquid foundation का भी packaging बहुत अच्छा लगता है. It's really nice and it comes with a pump. So I'm just going to quickly now show you the product. So now I'm going to apply this foundation, but before moving ahead with the application, I'm going to first prime my skin. And I'm going to prime my skin with my Marc Jacobs primer. मेरे घर के बाहर ही मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए हमेशा इतना डिस्टर्बेंस रहता है, इतना आवाज़ रहता है कि आई कांट इवन स्लीप प्रॉपर्ली. सुबह सुबह काम स्टार्ट हो जाता है और घर पर भी इतनी धूल हो जाती है कि पूछो मत.
It's annoying. अगर आपको कुछ आवाज आ रहा है then please try to ignore. And I'm also going to spray Urban Decay's Quick Fix Hydra Charged Complexion Prep Priming Spray. So I'm definitely going to draw some stripes first, and then I'm going to blend this foundation with my beauty blender. And on this side what I'm going to do is, because उन्होंने अपने website पर भी लिखा है and I think उन्होंने अपनी ये box पर भी लिखा है कि for full coverage swipe foundation directly on a dense flat brush and apply to face. So what I'm going to do is I'm going to take this foundation on a dense flat brush later on and then apply it and see. And don't worry guys, I will be swatching these two foundations side by side, तो आपको एक idea मिल जाएगा shade के बारे में. You know what I'm going to do right now is, first I'm going to swatch it on the back of my hand so you guys have an idea. Okay, so it feels so creamy. And इसके बाजू में I'm going to swatch Huda Beauty's 4 Filter liquid foundation. This is the liquid one. आप देख सकते कि शेड डिफरेंस कितना है. एंड ऑल्सो गाइस, ये जो फाउंडेशन है सेफोरा के वेबसाइट पर nnnow.com पर अवेलेबल है, सेफोरा के स्टोर में अवेलेबल है, नायका स्टोर में भी अवेलेबल है. नायका लक्स में मैंने देखा था जिस 2 दिन पहले, जो नायका का लक्स स्टोर है, ये अब तक नायका के वेबसाइट पर लॉन्च नहीं हुआ है, तो आई थिंक दे विल लॉन्च प्रिटी सून. I don't know why I'm so nervous. Oh, I'm very nervous and excited. Okay. Okay. And just a little bit on my forehead on this side. Like this. It is so creamy guys, it went on so smoothly. Now let's blend it. So this is our first layer. Okay, it's blending really beautifully, very easily, and it's giving pretty good coverage. So हमेशा जो मेरा कंसर्न रहता है, my neck is a lot more warmer than my face, so I always have to, and otherwise also you always have to match your foundation with your neck. Always remember that. Okay, so अगर आप ऐसे देखेंगे, you guys might think कि this foundation is a little warm for Ankita, but believe me guys, it is perfect for me because of my neck. It has beautifully matched with my neck, so it's perfect. So ये हमारा फर्स्ट लेयर है and it is looking pretty good guys, and it's given such good coverage. It's looking so good. Wow, very very good. और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है. It's actually looking very very natural. It's given a very natural finish with very good coverage. पहली application में it has given me medium coverage. So let's do one thing. Let's apply one more layer. Okay, actually ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, but लगा लेते हैं एक और लेयर. ठीक है, Honestly, I don't feel the need to go in with one more layer. Like first layer में ही मैं बहुत खुश थी. I got pretty good coverage. So this is our second layer, and believe me guys, it's not feeling heavy at all. It's not looking cakey. It's still looking very natural. And yeah, medium से थोड़ा ज़्यादा अब मुझे coverage मिल चुका है. Wow, I am impressed. I'm really impressed with this foundation. And
It's not emphasizing my textures guys. Like आप जब मैट फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपके टेक्सचर को वो एम्फोसाइज करता है. जैसे ये जो फाउंडेशन है ये टेक्सचर को काफ़ी एम्फोसाइज करता है. And it's not definitely accentuating any fine lines as such. Now let's apply the foundation on this side, and जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, I'm going to directly apply this foundation on my brush. This is one of my favorite foundation brushes. ये पैक का 265 brush है. So I'm going to swipe this foundation directly on my brush and then हम apply करेंगे. Okay? एक्चुअली काफ़ी अच्छा कवरेज मिल रहा है. Wow! And it's again blending so beautifully. Guys, काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है. I'm going to take some more because ये सारे एरियाज में लगाना है हमें. और now I'm going to go in with the second layer. So this is how this side is looking. आई थिंक दोनों ही साइड मुझे बहुत अच्छा कवरेज मिला है. लेकिन अगेन इट वॉज़ रियली ईजी ब्रश के साथ इसे ब्लेंड करना. लेकिन नोइंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करना. बट दिस इज़ अ रियली गुड ट्रिक इफ़ यू वांट लाइक मोर कवरेज. बट आई ऑल्सो थिंक ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील. I can tell you one thing for sure, that this is definitely one of my favorite foundations. I love stick foundations. Bobbi Brown का भी जो stick foundation है, it is one of my favorites, and this has definitely been added to that list. The formula is so creamy, it went on so beautifully. Like Bobbi Brown का जो stick foundation है, even though I love that foundation, उसका जो texture थोड़ा सा dry है, a little dry as compared to this one. Okay, but that one also blends really nicely. But ये उसके comparison में ज़्यादा अच्छे तरीके से and quickly blend होता है. So I am done with my foundation guys, and now I'm going to go in with the concealer. And आज मैं हुडा ब्यूटी का the Overachiever concealer अप्लाई करने वाली हूँ. This one is in the shade Graham Cracker, and believe me guys, this is also a very good product. My skin is looking really good. And now I'm going to set my under eyes with Huda Beauty's Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. This one is in the shade Blondie. Even this powder is really good guys. So yeah, this is a powder. मैं सोचा अभी मेरे पास बेस प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत हुडा ब्यूटी के हैं, तो क्यों नहीं हम हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें आज. Now let's apply the powder. Actually, you know what? I'm going to set my entire face with this powder. I've taken this powder on my sponge. Nice. Nice, nice, very nice. So now I'm going to check how my bronzer, blusher and highlighter applies on top of this foundation. So first I'm going to go in with my Benefits Hoola bronzer. So it's applying pretty nicely and also blending nicely.
For my blusher, I'm going to apply my Jordana's blusher in the shade Red Wood. This one also went on pretty nicely. And for my highlighter today, I'm going in with Huda Beauty's 3D highlighter palette. This is their Golden Sands edition one. And I'm going to go in with Seychelles, this one. Applying very nicely. Look at that glow. So all three products went on pretty smoothly, guys. So I am done with my base makeup, and I have to tell you guys that it's looking really nice. I'm very happy right now with the way my skin is looking. All right, so I'm just going to quickly finish rest of my makeup, and I'll see you guys very soon. So I'm done with my eye makeup, guys, and I have filmed a tutorial on this eye makeup look which I will be uploading after this video, so please stay tuned. And now, before setting our makeup, I'm just going to apply some of my Charlotte Tilbury's Airbrush Flawless Finish powder under my eyes and on my T-zone, just for that brightening effect. And this one is in the shade 2 Medium. Okay, now I'm going to set my makeup with Urban Decay's All Nighter Ultra Matte Long Lasting Makeup Setting Spray. We have come towards the end of this video, guys. So before ending this video, I just want to quickly share my final thoughts. I absolutely enjoyed using this foundation. I think it's a really nice creamy formula, lovely stick foundation, great if you're traveling, and it's best if you're on the go. Also guys, I did touch up on my blusher and highlighter because I realized कि जब मैं अपना आई मेकअप कर रही थी तो थोड़ा सा वो फेड हो चुका था, और पाउडर जब मैंने लास्टली पाउडर भी अप्लाई किया शार्लेट टिल्बरी का उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट ही जा चुका था. सो आई डिड टच अप ऑन माई ब्लशर एंड हाईलाइटर. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें बिकॉज मैं अपडेट देने वाली हूँ कि कैसा मेरा फाउंडेशन मेरी स्किन पर रहा, फॉर हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, ऑयली हुआ कि नहीं, ब्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ी कि नहीं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव छोटा सा अपडेट. सो डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड गाइज, एंड आई रियली होप दैट यू फाउंड इट टू बी हेल्पफुल, एंड आई शall see you guys very soon in my next one. Until next time, keep reviving your own fashion.